हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैं विराट कोहली की इस वाली ड्राइंग को की थी ट्रॉफी के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं इसको कलर करने वाली हूँ। तो जो भी इसका आउटलाइन ट्यूटोरियल वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हो वो जाके देख लेना चैनल पर। तो यहाँ पर आज मैं कलर पेंसिल से ही इसको कलर करने वाली हूँ। आप लोग ज़्यादातर इसके लिए ही वोट किए हो। तो मैं यहाँ पर ब्रांडेड कलर पेंसिल नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों के पास नहीं है। तो जो भी आप लोगों के पास है वो ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो आई थिंक आप लोगों के पास ये वाला डोम्स की 24 शेड्स कलर पेंसिल होंगे। तो पहले मैं इस कलर पेंसिल से ही ड्राइंग को स्टार्ट कर रही हूँ एंड आगे जाके वीडियो में और भी मटेरियल्स मैं यूज़ करूँगी शायद, लाइक ब्रश पेन या फिर कोई भी और भी मटेरियल्स मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो आगे जो भी मटेरियल्स मैं यूज़ करने वाली हूँ वो आप लोग वीडियो में ही देख लेना। तो चलो अभी इस ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अगर ड्राइंग में बॉर्डर रखना चाहते हो तो इस तरीके से आप लोग साइड में टेप लगा सकते हो। मैं यहाँ पर मस्किंग टेप यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी टेप यूज़ कर सकते हो। और अगर बॉर्डर नहीं रखना चाहते हो तो बस ऐसे ही छोड़ दो। एंड देन जो भी आप लोगों का आउटलाइन है उसको इस तरीके से इरेज करना है थोड़ा आउटलाइन को, नहीं तो कलर करते टाइम कलर पेंसिल के साथ ग्राफाइट मिक्स होके कलर एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पहले आउटलाइन को फेड कर लेना, इरेज कर लेना इस तरीके से। एंड देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर एक पेंसिल को अच्छी तरीके से शार्प करके देन कलर को अप्लाई करना है। तो बस यही ध्यान रखना है कि पेंसिल को बार बार शार्प करते रहना है एंड लेयर बाय लेयर कलर को धीरे धीरे अप्लाई करना है। देखो मैं यहाँ पर एकदम धीरे धीरे से अप्लाई कर रही हूँ, बट थोड़ा सा आप लोग के लिए स्पीड को बढ़ा दिया हूँ, तो वो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एंड कभी भी पेंसिल को इस तरीके से डीप करके प्रेशर देके यूज़ मत करना। हमेशा कलर पेंसिल को लेयर बाय लेयर ही अप्लाई करना होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि पेंसिल को अच्छे तरीके से शार्प कर लेना है एंड लेयर बाय लेयर कलर को अप्लाई करना है। तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, और वीडियो ज़्यादा स्पीड भी नहीं है तो आप लोग आराम से देख सकते हो मैं किस तरीके से किया हूँ। थोड़ा सा बस स्पीड को बढ़ा दिया, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आप लोग देखते रहो एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो देखते रहो आप लोग। Some sort of pain, you caused a permanent stain which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you will never see me coming.
होप गाइस यहाँ तक ड्राइंग करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बस आज का वीडियो में बस इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट्स जो भी है इसको कलर करने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।